Hello and welcome to our YouTube channel Rubal Solutions. In this program, we will count the number of digits in an integer. Let's start the program. Hash includes stereo.h. Int main. A variable n is taken for the long data type. A variable count is taken with int data type. n वेरिएबल लिया है लॉन्ग डेटा टाइप, काउंट वेरिएबल लिया है इंट डेटा टाइप और काउंट को कर दिया है 0। उसके बाद printf किया है एंटर एन इंटीजर, scanf किया है %d एंड n में वैल्यू ले ली है। उसके बाद कंडीशन लगाई है जब तक n नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता जाए, n इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 10, क्या कर दे n डिवाइड बाय 10। ठीक है, ऐसे लूप चलती जाए और काउंट जो वेरिएबल है उसमें प्लस प्लस करता जाए। दिस प्रोग्राम्स टेक एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ द यूजर एंटर 3452, the output of the program will be 4. The integer entered by the user is stored in variable n. Then the while loop is iterated until the test condition n not equal to 0 is evaluated to 0 अगर false होती है। After first iteration, the value of n will be 345 and the count is 1. After second iteration, the value of n will be 34 and the count is 2. After third iteration, the value of n will be 3 and the count is incremented to 3. After fourth iteration, the value of n will be 0 and the count is incremented to 4. Then the test expression is evaluated to false and the loops terminates. उसके बाद printf करके हम उस count को print करवा देंगे। Let's see the practical. I put 789672 and enter. कितने digits हुए? 6 digits. I put 12. कितने digits हुए? 2 digits. I put 1 2 3 3. ठीक है, I hope this program is clear and you are getting something, and you can see the program details in the comment box and do comment me if you want to ask something. Thank you so much for all the support and all the views. Love, have a nice day.